Good morning, friends. Welcome to my another video. Today I am covering irritable bowel syndrome (IBS). So let's start. Irritable bowel syndrome is a long-term disorder of the digestive system in which the intestines become overly sensitive and do not function normally, even though they may look structurally normal on tests. It mainly affects bowel movement and digestion. Common symptoms include abdominal pain, bloating, gas, diarrhea, constipation, or both. You can experience diarrhea alone, constipation alone, or you can experience both diarrhea and constipation. So it's a long-term disorder of the digestive system in which the intestine become overly sensitive. So it is a problem of the large intestine. We usually call it a colon. IBS is often called a functional gastrointestinal disorder or disorder of gut-brain interaction. The nerves in the digestive system may become extra sensitive to signals. This means the brain may overreact to normal digestive processes, resulting in pain or urgency, even when the colon is physically healthy. Stress worsens IBS. Anxiety, depression are common with IBS. The intestine is deeply connected to emotional centers in the brain. So, even if your colon is healthy from outside, you may experience IBS because it become overly sensitive from inside. And brain and gut are interconnected to each other. Okay, which area gets affected? Irritable bowel syndrome primarily affects the large intestine, also known as the colon. While it does not cause the kind of a structural damage or permanent inflammation seen in conditions like Crohn's disease or ulcerative colitis, it impacts how the colon functions. A clear distinction between a stomach and large intestine is stomach is basically upper abdomen organ that digests food, whereas large intestine is a long tubes where food is absorbed and stool is formed. So this is a difference between stomach and intestine. Basically आपका जो पेट होता है और जो आपकी आंतें होती हैं उसमें क्या एक basic difference है. This is the basic difference just I explained. How IBS affects the intestine. Normally intestinal muscles contract rhythmically to move food. In IBS, contraction may become too strong, which leads to diarrhea, too weak, which leads to constipation, irregular, which leads to pain, bloating, alternating bowel habits. The nerves in the gut also become hypersensitive, so normal gas or stool may feel painful. What are the different types of IBS? IBS-C, constipation predominant, IBS-D, diarrhea predominant, IBS-M, mixed, both diarrhea and constipation, IBS-U, unclassified. Common symptoms of IBS. First is abdominal pain or cramps, often relieved after passing stool. Usually lower abdomen can come and go. You may feel pain or cramps and it can go after some time. Again, you feel starting the same. Bloating, feeling of abdominal fullness, tightness. Stomach may appear swollen. Gas or flatulence, excess burping or passing of gas. Altered bowel habits, either diarrhea, constipation, or alternating between both. Mucus in stool, few people notice white color mucus. Feeling of incomplete bowel emptying, feeling like stool is still left after using the toilet or washroom. So these are the common symptoms. Apart from these, there can be other symptoms also, but these are the
Common symptoms which usually encountered in patients having IBS in the past. What causes IBS? The exact cause is still not completely understood. Scientists believe IBS occurs due to multiple interacting factors. Food intolerance sensitivity. Certain foods trigger symptoms in many people. Common triggers are people who are having IBS, they may face food intolerance or certain sensitivity after having or consuming certain foods, which include milk or dairy product. You generally feel lactose intolerance whenever you eat dairy or a milk product. You may feel increase in your diarrhea or constipation. So that is lactose intolerance. Whenever you eat spicy food, it increases your frequency of diarrhea. It can increase your frequency of diarrhea. Oily food, beans, cabbage, carbonated drinks, caffeine, alcohol, wheat, gluten in some people. This is basically ग्लूटेन इंटॉलरेंस whenever you अब जब आप गेहूं की रोटी खाते हो तो that time if you are having an IBS you may feel increase in frequency of your diarrhea. Your stool passage will become more frequent. Let's say generally you go to the toilet once or twice in a day if you are not having IBS. But if you are having an IBS and you are consuming any of these products, there is a chance your frequency of a stool become 4 or 5 times in a day. So if you are having any gluten insensitivity or you are lactose intolerant, then definitely you have to take care of these things, and you have to figure out the after eating certain products whether your frequency of stool is increased or not. There are certain tests which can doctor recommend you to figure out the certain allergies in your body. So that food panel test generally include veg and non-veg. So if you are a vegetarian, you can ask laboratory to avoid the testing of non-veg items as you are not consuming. And if you consume both, you can go for the entire food panel test. Generally, the cost is rupees 10,000 to 15,000. It depends on you whether you want to go for that allergy panel test or not. If you are aware that I am allergic to few stuff, would recommend you to stop eating those items. Or if you are not familiar that what is triggering IBS, or the situation is getting worse, you can go for full body panel test. It's up to you. Difference between IBS and IBD: inflammatory bowel disease. So IBS is irritable bowel syndrome and IBD is inflammatory bowel disease. IBS is a functional disorder, whereas IBD is inflammatory disease. No visible internal damage seen in IBS to the large intestine, whereas actual inflammation ulcers seen in irritable bowel disease. In IBS, colonoscopy or endoscopy is normal most of the times, whereas in IBD, colonoscopy is abnormal. You may see the difference in the structure. IBS is generally not a life-threatening problem, whereas IBD can become serious. IBS includes IBS-C, IBS-D, IBS-M, IBS-U, which I already explained you here. Whereas IBD includes Crohn's disease and ulcerative colitis. How is IBS diagnosed? There is no single definitive test. Doctors diagnose IBS based on symptoms, duration, and exclusion of other diseases. So there is one diagnostic method, room 4 criteria. IBS is suspected if abdominal pain occurs at least one day
or week for 3 months and is associated with change in stool frequency, change in stool appearance, relief after passing stool. So if you are encountering any abdominal pain for at least 1 day or in a week for continuously 3 months, and you are experiencing some change in your stool frequency, let's say in normal you are going to the toilet once or twice in a day, and suddenly your frequency increases to 4 or 5 times in a day, or stool appearance, let's say you have a solid stool, but in IBS you generally your stool passages becomes liquid or watery, or you are getting a relief after passing of the stool, then there is an indication that you may have IBS. Test generally doctors recommend if you you are having IBS, or doctors want to confirm whether you are having an IBS or not. To rule out other diseases, doctor can recommend blood test. It can be complete blood test which include other parameters also like kidney, liver and other stuff, or it can be specific to stomach only, or large intestine or other portion uh, of the body. Stool test, doctor generally recommend stool test, thyroid test, celiac disease test, colonoscopy and endoscopy. So these are the general tests which doctor recommend you if you are having an IBS. These tests will not figure out directly IBS in your body. These tests rule out the probability of having other diseases. Let's say your colonoscopy and endoscopy report is normal, then the chance of Crohn's disease and ulcerative colitis is ruled out. But still you have an IBS, irritable bowel syndrome. Let's say your blood test is normal, still you have an IBS. So as I already told you, there are multiple factors which led to IBS. Go for endoscopy and colonoscopy if you are familiar that you are having some stomach related problem or intestinal related problem in the past. Doctors can force you, but it's up to you whether you want to go for the test, because sometimes many people are not comfortable with the procedure, because in colonoscopy generally the pipe or whatever you call, doctor insert from your anus, and in endoscopy that pipe or whatever you call generally insert from your mouth. So many people feel discomfort at that time, so it depends on you whether you want to go for the procedure or not. Can IBS be cured permanently? Some people recover completely, others have recurring symptoms throughout life. IBS usually behaves like a chronic manageable condition. You may consider IBS as blood pressure or sugar. Till the time you are managing your symptoms, having proper medication, you are under control. But the moment you skip your medicines or you start eating something which can elevate your blood pressure or sugar level, then it again come back into the picture. So it's a chronic manageable condition. Symptoms often improve significantly with correct diet, stress control, proper treatment. Treatment for the patients having IBS: consult with a good internal medicine doctor or gastroenterologist. So these are the two doctors which can figure out whether you are having a IBS or not. Don't consult with a physician. As I mentioned, consult with a good internal medicine doctor or gastroenterologist. There is a difference between a physician and an internal medicine doctor. So go with IM. Okay. You can start walking, cycling, yoga. Exercise improves bowel movement and reduce stress. As I already told you, stress is one of the factor which can worsen IBS. Stress cannot
led to IBS, but if you are having an IBS already, stress can worsen your problem. Third is improve your sleep cycle. Not Don't go for the test on your own. Ask doctor first. So to sum up, स्ट्रेस जो है वो आपकी आईबीएस की प्रॉब्लम स्टार्ट नहीं करेगा, बट अगर आपको आईबीएस ऑलरेडी है और आप स्ट्रेस हो, तो स्ट्रेस आपकी जो प्रॉब्लम है उसको और ख़राब कर सकता है। आपको एंजाइटी हो सकती है, आपको डिप्रेशन हो सकता है, आपकी स्लीप साइकिल अगर डिस्टर्ब है तो उसको आपको ठीक करना होगा। ट्रीटमेंट क्या है? आप एक इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर के पास जा सकते हो, उनको अपनी सिम्टम्स बता सकते हो, डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगा कि कौन से टेस्ट कराने हैं, कौन से नहीं कराने हैं। आफ्टर दैट ही और शी कैन फिगर आउट वेदर यू आर हैविंग एन आईबीएस और नॉट। जनरली जिन पेशेंट्स को आईबीएस होता है उनको प्रोबायोटिक्स दिए जाते हैं, कैप्सूल्स दे सकते हैं, टैबलेट्स आती हैं या अदर फॉर्म में प्रोबायोटिक्स दिए जाते हैं। ठीक है, जो लिविंग बैक्टीरिया होते हैं बेसिकली वो आपको दिए जाते हैं। लैक्टोबैसिलस दिया जाता है, प्लस आपको याकुल्ट भी ले सकते हो आप। याकुल्ट एक जापानीज कंपनी का प्रोडक्ट है जिसमें लाइव बैक्टीरिया होते हैं, वो भी आईबीएस के पेशेंट्स में हेल्प करते हैं। बट एज आई रिकमेंडेड एंड आई मेंशनड इट एज अ नोट, डोंट गो फॉर द टेस्ट ऑन योर ओन, आस्क डॉक्टर फर्स्ट। आप डॉक्टर के पास जाओ, आप टेस्ट कराओ, उसके बाद डॉक्टर आपको जो रिकमेंड करते हैं कि आपको ये कैप्सूल लेना है या आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी है, लेट से आपको ग्लूटेन इनसेंसिटिविटी है या आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, तो आपको मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट आपको छोड़ना होगा। नहीं तो वो बार बार आपके आईबीएस के जो सिम्टम्स हैं उनको वर्स करेंगे। आपको डायरिया इंक्रीज हो सकता है, आपको या आपको कॉन्स्टिपेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, या आपको ग्लूटेन इनसेंसिटिविटी है, आपको बार बार गेहूं के आटे से आपका डायरिया ट्रिगर हो रहा है, तो आपको गेहूं का आटा बंद करके यू कैन स्विच टू बकव्हीट फ्लोर जो कोटू का आटा होता है, या आप रागी पे जा सकते हो, या किसी और आटे की आप रोटी खा सकते हो। आपको गेहूं का आटा बंद करना होगा। तो यू हैव टू फिगर आउट कि मेरे को कौन कौन सी चीज़ों से एलर्जी है, एंड यू हैव टू स्टॉप टेकिंग ऑल दिस इमिडिएटली इफ यू आर गोइंग थ्रू आईबीएस। एंड ये एक क्रॉनिक कंडीशन है, ऐसा नहीं है कि आज आज आपको आईबीएस है, आपको आपका ठीक हो गया, आपके सिम्टम्स नॉर्मल हो गए तो ये आपको फ्यूचर में नहीं होगा। देयर इज अ चांस दैट दिस कंडीशन विल कम बैक इन द फ्यूचर ऑल्सो, सो यू हैव टू टेक प्रिकॉशंस एवरी टाइम। ऐसा नहीं है कि आपको वीट से ग्लूटेन से आपको इनसेंसिटिविटी है, या लैक्टोज या डेयरी प्रोडक्ट से आपको इंटॉलरेंट हो आप उनके लिए, तो ये लाइफ टाइम रहेंगे। काफ़ी लोगों में देखा गया है कि वो लैक्टोज इंटॉलरेंट थे, बट आफ्टर सर्टेन ईयर्स ऑफ पासेज ऑफ टाइम दे बिकम लैक्टोज टॉलरेंट। उनको जो डायरिया ट्रिगर हो रहा था वो मिल्क प्रोडक्ट कंज्यूम करने के बाद उनको डायरिया ट्रिगर नहीं हो रहा है। सेम विद ग्लूटेन ऑल्सो, देयर आर पीपल, लैक्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड जिनको एक पर्टिकुलर टाइम पे गेहूं का आटा जो होता है उससे उनको प्रॉब्लम थी, वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते थे। बट आफ्टर सर्टेन ईयर्स ऑफ मेडिकेशन और चेंज इन लाइफ स्टाइल, उनके जो गेहूं से उनको एलर्जी थी वो उनकी ठीक हो गई विद टाइम। आपको लाइफ लॉन्ग भी हो सकती है ये एलर्जीज जो मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं। कैफीन, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कैबेज, बीन्स, ऑयली फूड, स्पाइसी फूड, ये आपको लाइफ लॉन्ग भी हो सकती हैं और एक सर्टेन पीरियड के लिए भी हो सकते हैं। काफ़ी बार ऐसा भी देखा गया है कि जो ग्लूटेन इनसेंसिटिविटी का टेस्ट होता है उसमें आप नेगेटिव आए, आपकी रिपोर्ट में ब्लड टेस्ट में वो टेस्ट नेगेटिव आया, लेकिन स्टिल आपको ग्लूटेन इनसेंसिटिविटी है। अगर आप गेहूं का कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हो तो आपको डायरिया हो रहा है। सो डोंट रिलाई कंप्लीटली ऑन योर ब्लड टेस्ट रिपोर्ट कि रिपोर्ट में नेगेटिव आया है तो मुझे नहीं है। रिलाई ऑन द सिम्टम्स अराउंड यू। अगर आपको ग्लूटेन के बाद वीट के बाद आपको डायरिया हो रहा है तो यू हैव टू स्टॉप
कंज्यूमिंग द सेम, या आपको डेयरी प्रोडक्ट से बाद हो रहा है, यू हैव टू स्टॉप एंड कंसल्ट विद योर डॉक्टर इमीडिएटली इफ सिम्टम्स एग्रेवेट। ओके, सो आई होप यू आर अवेयर ऑफ। इंडिया में थोड़ा सा मिसकंसेप्शन भी है पेरेंट्स में और काफ़ी लोगों में। जनरली इंडियन पेरेंट्स बिलीव इन मेडिकल रिपोर्ट और फाइंडिंग्स, लाइक अल्ट्रासाउंड हो रहा है तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, या आपका सीटी स्कैन हुआ या एमआरआई हुआ तो उसकी रिपोर्ट आती है। लेट से आपका ब्रेन का एमआरआई हुआ, उस रिपोर्ट में आएगा कि आपके ब्रेन में ये प्रॉब्लम है, स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं या कुछ और है। आईबीएस के केस में ऐसा आपकी रिपोर्ट में कुछ नहीं आएगा। एज आई ऑलरेडी मैंशनड, आप एंडोस्कोपी के लिए जाते हो, आप कोलोनोस्कोपी के लिए जाते हो। These two tests can help you in ruling out other diseases, but these two tests can't assure you that you are having an IBS. So मेरी इंडियन पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि if your child is having an IBS or he or she is going through IBS, please help him or her। उसको आप डांटो मत या उसके आप चिल्लाओ मत कि आपको कोई सिम्टम नहीं है, आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है, आपका ग्लूटन का जो टेस्ट है आईजीटी वो नॉर्मल है। स्टिल आप उसको ब्लेम करे जा रहे हो कि रिपोर्ट सारी नॉर्मल होने के बाद भी उसको आईबीएस है। तो मैं वही बोल रहा हूँ, उसको आईबीएस हो सकता है, आप उसकी रिपोर्ट भी नॉर्मल हो सकती है। कंसल्ट विद द डॉक्टर, जो डॉक्टर बोल रहा है गो विद द डॉक्टर एडवाइस एंड प्रोसीड अकॉर्डिंगली। रिपोर्ट में कुछ नहीं है या बाकी चीज़ों में कुछ नहीं है, डोंट गो विद दैट प्री ऑक्यूपाइड माइंडसेट। डॉक्टर्स आर देयर टू गाइड यू ऑन दिस। गेट एडवाइस फ्रॉम अ डॉक्टर एंड गो अहेड। ओके, आई होप आपको आईबीएस के बारे में पता चला होगा कि ये लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है और क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। सो इफ़ यू आर नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज इन the future. Thank you for watching.